Good morning, students. Today we are going to solve the exercise 2.6 linear equation in one variable. So first question of this exercise is written here. 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. So in this type of questions, students, we have to take a method that is cross multiplication method. First, write this 8x minus 3 upon 3x is equal to 2 upon 1. Okay, student? And multiply this numerator with denominator of this and this denominator with numerator of this one. Okay, students? Cross multiplication. This method is known as cross multiplication. Cross multiply. Okay, student? Cross multiply किया. अब cross multiplication में 8x minus 3 multiplied by 1, that is 8x into 1 is equal to 8x minus 3 1 ja 3 minus 3 is equal to 2 3 ja 6x here, student. Clear, student? This equation is in a line now. Okay? So you have to take variable one side and the numbers other side. So 8x, this one minus 6 is equal to, and this 3, that will be 3 minus 6x here, student. Okay? सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में यहाँ वेरिएबल को वन साइड में हमने ले लिया और प्लेन नंबर्स को एक साइड में कर दिया. 6x इज प्लस हियर एंड नाउ इन दिस साइड इट विल बी माइनस, नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. एंड दिस वन माइनस 3 हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी आर ट्रांसपोजिंग दिस इनटू राइट हैंड साइड, देन इट विल बी प्लस. ओके, transposing 6 to LHS and 3 to, that is minus 3 to RHS. क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हमने दोनों नंबर्स को ट्रांसपोज कर दिया. नाउ 8x minus 6x, that is 2x. 2x is equal to 3. Now 2x is equal to 3, then x is equal to 3 by 2. Again transposition. Okay, so transposing 2 to RHS. Here it was the sign of multiplication, 2 into x, and when we take 2 here, then it is the division, 3 divided by 2. Okay, student? So this is the answer. This is the value of x. And now this one, question number second. In this one is 15 by 1, student. Clear? So this one 15 by 1. And next step, that is 9x upon 7 minus 6x is equal to 15 by 1. Clear, student? Write the whole equation like this. So by using cross multiplication method. Okay? स्टूडेंट्स, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आप इसको भी पहले कर सकते हैं, एक हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं, या इसको भी ले सकते हैं. किसी को जो आपको इजी हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट? सो 9x इंटू 1 इज इक्वल टू 9x एंड दिस 15 7 जा 105. ओके स्टूडेंट? एंड 15 6 जा minus 90x. Clear, student? This one 6x.
So now we have to make this variable one side. Clear? So 9x plus 90x is equal to 105 in this third step. First step, second step, now third step. Okay? Why? Because you have transpose here 90x students. Okay? So this one transposing minus 90x to RHS. Clear student? So 90x and 9x, that is 99x is equal to 105. Clear student? And x is equal to 105 by 99. Now divide this 516 and 9918. These numbers 105 and 99 both numbers will be divisible by 3. ये 3 के से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, तो 3 से आप डिवाइड कर दें. क्लियर स्टूडेंट? इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 1 15, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. This number is in its lowest form. This number is 35 by 33. This is the answer. And now third part. Third question. That is, third question is written here, students. That is Z. First step, Z plus 15 is equal to 4 by 9. Clear student? So cross multiplication. First multiply this one. 9z is equal to 4z plus 15 4 ja 60. Okay. Now transpose 4z to the left hand side. 9z minus 4z. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पॉजिटिव है और जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. इज इक्वल टू 60. दैट इज 5z 9 माइनस 4, दैट इज 5z 9z माइनस 4z. 5z इज इक्वल टू 60. ओके स्टूडेंट, यू कैन राइट हियर बाई ट्रांसपोजिंग नंबर्स को आपने ट्रांसपोज किया है. अगेन z इज इक्वल टू 60 by 5, that is reduce it 12. Z is equal to 12. Okay students? Students, इन सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चंस. अगर चेक करना है क्वेश्चंस को तो जो वेरिएबल हो उसके प्लेस पर जो आपका आंसर आ रहा है उस नंबर को रख देंगे और फिर देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाता है, इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स? So fourth question and fifth question. And that is 3y plus 4 plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus 2 by 5. And question number 5, 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 2y. Yes student, this is question number 4th. In 4th question, here 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus 2 by 5. So write the question first.
3y plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus 2 by 5, and by cross multiplication method. Okay students, cross multiplication. Cross multiplication method, this one. Okay, 5 3 ja 15, y plus 5 4 ja 20 is equal to minus 2 2 ja minus 4, and minus minus it makes plus, 6 2 ja 12 plus 12 y. Clear student? This one minus 4 and this one plus 12 y. Now 15y, sorry, this one 15y, 15y plus 20, transfer the numbers, okay, transpose these numbers, 20 to the right hand side, and this 12 is transfer 12 in the left hand side. Okay student, this one 15y minus 12y is equal to this one minus 4, and 20 is plus here, so it will be minus after changing the side by transposing. Okay student, so 15y minus 12y, that is 3y, is equal to minus 4 and minus 20, that will be minus 24. Y is equal to minus 24 by 3 by transposing. This method is called transposition method. Okay students, so y is equal to, what is the value of y? 3 8 ja 24, so here minus 8, this is minus 8, the value of y is minus 8 here. And this one, last question of part 1. Okay students, 7y plus 4 is equal upon y plus 2 is equal to minus 4 by 3. So 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4 by 3. Cross multiplication method. Okay students, 3 7 ja 21y, this one 21y, 3 4 ja 12 plus 12 is equal to minus 4 into y, that is minus 4y, plus 2 into minus 4 minus 8. Clear student? So transpose the variables in one side and the numbers in the other side. Okay, so 21y, this minus 4y, so it will become plus 4y after changing its side. Okay, is equal to this one minus 8 and this one plus 12, it will become minus 12. Okay students, so 21 minus plus 4, that is 25y, is equal to minus 8 and minus 12, that is minus 20, and y is equal to minus 20 upon 25. Here after transposing by transposing method, and here also by transposing the numbers. Okay students, and this y is equal to, reduce this number in its lowest term, 4 5 ja 20, sorry not 4, 5 will be LCM of 20 and 25, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25. So numerator will be minus 4 and denominator will be 5. This one is answer. Okay student.
This is question number 6. The age of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now their ages will be 3:4. Find their present ages. Students, in this question is age related question, and in this question age of two boys are given here. Okay, and after 4 years from now, it means after 4 years their ages will be 3:4. उनकी एज का रेशियो चेंज हो जाता है. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द एज ऑफ a boy in ratio, that is in the given ratio. In respect of given ratio, the ages should be taken. Okay students, जो इनकी एज ली जाएगी वो रेशियो के अकॉर्डिंग हम एज को अभी लेंगे. लेट present age of Hari be X years. Sorry, ratio is 5x years. Okay student, and present age of Harry be 7x. ओके स्टूडेंट, जो एज का रेशियो था उसी रेशियो में हमने एज को कंसीडर कर लिया, यहाँ पर एज को ले लिया. सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x ईयर एंड हैरी बी 7x ईयर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एज आफ्टर 4 ईयर, because it is given 4 years from now their ages will be 3:4. Students, जैसे आज आपकी एज 10 ईयर है तो आफ्टर 4 ईयर की एज कितनी होगी? इट मीन्स यू हैव टू ऐड 4 in your present age. So present ages are this. So after 4 year from now means after 4 years. After 4 years Hari's age will be 5x plus 4 years. 4 years के बाद हरी की एज में 4 ईयर प्लस कर दिया हमने. एंड हैरीज एज will be 7x plus 4 years. ओके स्टूडेंट, तो हरी और हैरी की एज हमने फाइंड आउट कर लिया जो 4 इयर्स के बाद उनकी एज होगी. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, this ratio will be, ratio of their new age will be 3:4, means 5x plus 4 upon 7x plus 4 is equal to 3:4, 3/4. Okay student, now this is an equation and you have to solve the equation to find out the value of x. Okay, so this cross multiplication method. Okay, this one, first multiply this. 7 3 ja 21x plus 12 is equal to, now 5 4 ja 20x plus 4 4 ja 16. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, इसमें हम किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड में और किसी को भी राइट हैंड साइड में रख सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है. दैट इज 21x plus 12 is equal to 20x plus 16. Okay student, now transpose the variables one side and numbers another side. Okay, 21x minus 20x is equal to 16 minus 12.
Clear student? By transposing. (21x minus 20x, that is x, is equal to 16 minus 12, that is 4. This is the value of x. Now you have to find out the ages, present age of Hari. So Hari's present age is equal to 5x. It means 5 into 4, that is 20 years. Okay student? And Harry's present age that is 7x, and that will be 7 into 4, and that is 28 years. Okay student, this is the answer. In this type of question, first of all you have to take the present age. जो present age होती है उसको हम लेते हैं, उसके बाद before की या after की जो age होती है उसको लेते हैं, और फिर compare करके according to question उसको एक equation में सेट कर देते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. उसमें से जो वेरिएबल होती है तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर एज फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ फ्रैक्शन, मीन्स रेशनल नंबर. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. सो स्टूडेंट्स, in this type of questions, first of all we have to consider the numerator or denominator. पहले हमको numerator या denominator उस fraction का या उस rational number का एक assume करना होगा, उसको consider करना होगा. If the numerator increased by 17 and denominator decreased by 1, the number obtained is 3 by 2. Find the rational numbers. Okay students, so solution. First of all, we have to take the numerator or denominator. Okay, what is the given? The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. So first of all, we have to take numerator. Let numerator of rational number, okay student, rational number here be x. न्यूमरेटर को हमने रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को x हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर x ले लिया. देन डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर भी, रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर क्या होगी, दैट इज 8 मोर. ओके, सो x प्लस 8. क्लियर स्टूडेंट? न्यूमरेटर इज x, देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 8 बाई ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 8. ओके, तो उससे न्यूमरेटर से ग्रेटर है इसका डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन आ रेशनल नंबर बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन x प्लस 8. ओके स्टूडेंट, अगेन in this question again it is given that if the numerator increased by 17 and denominator decreased by 1. Okay student, need not to write the fraction here. Numerator is increased by 17, numerator is increased
by 17 is equal to x plus 17. Denominator is decreased by 1, that will be x plus 8 minus 1, that will be x plus 7. Okay students? So denominator is decreased by 1, the numerator obtained 3 by 2. Okay students? So according to question, that is numerator upon denominator. Okay, so x plus 17 upon x plus 7 after changing the numerator and denominator. Okay student, the ratio will be 3 by 2. Now this is an equation and you have to solve this equation. Okay student, now 3x plus 7 3 are 21 is equal to, multiplied by 2, 2x plus 7 2 are 17 2 are 34. Yeah. Okay student, this multiply by this and this by this. So transpose the variables one side and the numbers another side. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, इधर ये प्लस था स्टूडेंट, यहाँ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 34 माइनस 21. क्लियर? बाय ट्रांसपोजिंग. And in the next step 3x minus 2x, that is ex, and this one 34 minus 21, that is 13. What is the value of x? 13. Then what will be the fraction? What will be the fraction? Fraction student, you can write here rational number. Okay, rational number that will be x upon x plus 8, numerator upon denominator x upon x plus 8. First it was. Okay, now put the value of this 13 in place of x, that is 13 upon 13 plus 8, that will be 13 upon 8 plus 13, that is 21, and this is the answer student. 13 upon 21 is the rational number. Okay students, चेक इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर इसको हमें चेक करना हो तो हम सेम कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो कंडीशंस दी गई. 13 में 17 प्लस कर देंगे. ओके स्टूडेंट, 13 प्लस 17 दैट इज 30. ओके, एंड इसके डिनोमिनेटर से कितना माइनस करेंगे? 1. 20 माइनस 1, दैट विल बी 20. न्यू रेशियो विल बी 30 अपॉन 20 एंड दिस विल बी 3 by 2. ओके स्टूडेंट, तो ये चेक हो गया. चेकिंग का स्टेप था, इसको हम शॉर्ट में हमने चेक किया. आपको जब चेक करना होगा तो सारी वैल्यूज़ को आपको रखना होगा उसमें. क्लियर स्टूडेंट? सो 13 upon 21 इज द करेक्ट आंसर.